So we found that when an electric field strikes a metal surface, uh, at that surface, the electric field may have two components. One tangential to the surface, the other one normal to the surface. The tangential component will simply go to zero. You will left with only the normal component, and that normal component will make surface charge density at that point. Okay. For example, here is some metal. Okay. Uh, Say there's huge positive negative here. So whenever the electric field strikes this surface, say perpendicularly, okay, so this is suppose E normal, epsilon naught equals to D normal. So what will happen? This negative charge will come here, okay, and this positive charge will try to move far away. The charges will go to the surface. That's going to happen. And that will actually introduce a new field which is inside from positive to negative. This blue field will try to penetrate through, but an opposite electric field is created. This electric field is precisely opposite to this field, and basically the two field will cancel each other, and effectively there is no field in matter. Okay, no field in metal, because E external equals to inside the metal is E external minus E induced, which goes to 0. The two cancel each other. बात की समझ आ रही है? दोनों फील्ड एक दूसरे को क्या कर लेंगे? कैंसिल कर लेंगे. ओके, लेकिन इफेक्ट क्या होगा? कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा. ओके, क्लियर एवरीथिंग? Any question here? No question? क्वेश्चन है तो बताएं. नो सर. No question? Okay. Go through this example, okay? Solve this one. ये एग्जाम्पल थोड़ा सा सॉल्व करें, इस पे टाइम स्पेंड करें आज. ठीक है? ठीक है सर. इस 5.3 भी सॉल्व करें. And there is a topic called as method of images. ये आपने आज घर में जाके पढ़ना है. ठीक है? From chapter 5. ये पढ़े, वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है. इसको आज पढ़े. अगर कोई प्रॉब्लम फील हो रहा है तो वील डिस्कस दैट. इसका एप्लीकेशन हम अगले चैप्टर में देखेंगे. ठीक है? सो नो वरी. अगर इसकी समझ नहीं आई तो मुझसे क्वेश्चन कर ले, नहीं तो हम इसको एप्लीकेशन वाइज अगले चैप्टर में डिस्कस कर रहे. बट मीनवाइल इसको आज आपने घर में पढ़ना है. ठीक है सर. ओके, एनी क्वेश्चन हियर? तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो जब नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड हिट करेगा कंडक्टर को, तो बेसिकली चार्जेस क्या हो जाते हैं? चार्जेस ऑपोजिटली मूव करते हैं. ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर से हिट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, प्रोटॉन दूसरी तरफ जाएंगे.
अंदर एक स्ट्रॉन्ग फील्ड बनेगा जो एक्सटर्नल फील्ड को कैंसिल करेगा. ओके, सो ये हमारी सारी थ्योरी है. सो अप्लाइड नॉर्मल फील्ड, दिस इज नॉर्मल. इंड्यूस इनसाइड फील्ड, दोनों को जमा करेंगे तो जीरो आएगा. सो अंदर का जो फील्ड होगा, डी इंड्यूस इनसाइड इज प्रिसाइसली ऑपोजिट टू द डी अप्लाइड. ओके, सो ये हमारी सारी थ्योरी है इसकी. कंडक्टर्स जब भी मेटल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी मेटल्स को स्ट्राइक करे, ठीक है, हमारे पास क्या होगा, इंड्यूस फील्ड अंदर बनेगा Yes, sir. बिकॉज ऑफ द चार्ज. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं. बिकॉज ये मैक्सिमम सेपरेशन पॉजिटिव नेगेटिव में क्यों आती है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, वो बाउंड नहीं होते. मेटल्स में बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, कंडक्टर्स में बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं. जैसे कॉपर में मैंने एग्जांपल दी थी 10⁻29 free electrons for every 1 meter cube of copper, huge number, and they freely move around. So when electric field hits copper, the electron moves towards the electric field, thereby making leaving the positive charges on the other side of the metal, creating an induced field inside. That induced field cancels the applied field, effectively making zero electric field inside the metal. Okay. So that concludes the chapter. Next time we'll start on chapter 6. So I hope you will study these few examples and the method of images Inshallah, sir. yourself. कोई question है? No question? No, sir. No.